Hello students, good morning to everyone. We are on the chapter number 6, going to sleep. So in previous video we have done with these phrases and sentences. Then we understand noun phrase and the exercise. Then we understood the prepositional phrase, all about the position of the things. It is called prepositional phrases, and now we are going to start the next exercise in our textbook, page number 6060. So it is vocabulary part. Let's read the instruction. Look at these pairs of the words: imaginary, real. Imaginary and opposite will be real. Loudly, opposite will be softly. Remember, opposite will be forget. So here we have seen the pair of the word, but opposite pair of the words. Imaginary, imagine करना, मतलब वो एक assumption लगाने जैसा है. And opposite will be real. Okay. Loudly, then softly. Remember, याद रखना. Forget, भूल जाना. So these pairs of words are antonyms. Opposite word को क्या बोलते हैं हम? Antonyms. An antonym is word opposite in the meaning to another. Opposite word होता है, that is called antonym. Now complete the answers with the antonyms of the word in the color. Colorful जो wordings यहाँ पे दिया है, एक सेंटेंस है, वहाँ पे कलर में वर्ड दिया है, राइट? एंड इन द वेरी नेक्स्ट सेंटेंस देयर इज ब्लैंक इंस्टेड ऑफ दिस वर्ड, सो वी हैव टू राइट डाउन ऑपोजिट ऑफ द कलर्ड वर्ड. सो लेट्स सी एन एग्जाम्पल. नंबर 1, हाउ मेनी बॉयज वेर एब्सेंट यस्टरडे. कलरफुल वर्ड में कौन सा है इंस्ट्रक्टेड हियर? एब्सेंट. तो एब्सेंट मतलब प्रेजेंट नहीं होना. सो एब्सेंट का ऑपोजिट होगा, एंटोनिम होगा प्रेजेंट. सपोज इन एन एग्जामिनेशन इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ टॉप. टॉप मतलब क्लोथिंग वाला टॉप नहीं. आई एम आस्किंग अबाउट द पोजीशन टॉप. सो टॉप मतलब सबसे ऊपर, एंड ऑपोजिट एंटोनिम विल बी बॉटम. ओके. So let's read question number 2. Do you keep your books in the top drawer? As I give an example here, the same sentence is there. Do you keep your books in the top? So we have to find antonym of the top. No, I keep them in the bottom drawer so that I can reach them easily. So here we are learning about antonyms. Where the children playing noisily. Noisily मतलब from where noise is coming. And opposite antonym will be no. I thought they played quietly. Quiet मतलब शांति से. Noisily मतलब आवाज़ वाला. Number 4. Do you think it is dangerous to play in the woods? Dangerous, खतरनाक. It is quite safe to play there. Come on. So antonym will be safe. Dangerous, safe. Were you asleep when telephone rang? Asleep मतलब सो जाना. सो जाना मतलब antonym will be जाग जाना. So that is awake. No, I was wide awake and answered it very quickly. So here we learn about opposite words, antonyms of the words. So let's have a quick revision of it. Absent, present. Top, bottom. Noisily, quietly. Dangerous, safe. Asleep, awake. So if it is asked in examination, write down antonyms. Then you will have to remember antonyms means ma'am is asking about opposite words.
Now let's move to the next exercise, dictionary work. Look up at dictionary to find the meanings of the words in color. Complete the sentences with the correct word. View और sight, ये दोनों का मीनिंग थोड़ा सा सेम होता है, बट वी हैव टू फाइंड इट आउट where it will be fixed either in this sentence or in this sentence. View or sight. I will not let you out of my blank. The blank from the mountain top was wonderful. The sight from the mountain top was wonderful. It can be I will not let you out of my sight. See, this is one type of phrase, ये एक टाइप का फ्रेज है. जैसे हम बोल सकते हैं कहावत जैसा है, आई विल नॉट लेट यू आउट ऑफ माई साइट, मैं मेरी नज़र में से तुझे जाने नहीं दूंगा. सो वी हैव टू राइट डाउन साइट हियर. व्हाट विल रिमेनिंग? व्यू. द व्यू फ्रॉम द माउंटेन टॉप वॉज वंडरफुल. माउंटेन के टॉप पे जो चढ़ के जो व्यू आता है वो बहुत ही वंडरफुल लगता है. नंबर 2, रिमेंबर मतलब याद करना. रिमाइंड मतलब याद करवाना. अगर आपको मुझे कुछ याद दिलाना है देन आई विल रिमाइंड यू. अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आपको याद रखने हैं देन इट इज़ रिमेंबर. प्लीज़ रिमेंबर टू वाटर द प्लांट्स एवरी डे. आपको एवरी डे क्या याद रखना है? टू प्लांट द वाटर. विल यू ब्लैंक मीज टू स्विच ऑफ द कंप्यूटर इन द इवनिंग. तुम मुझे याद दिलाओगे? विल यू रिमाइंड मी? ओके, रिमेंबर मतलब याद करना, रिमाइंड मतलब याद दिलाना. बिगिन और स्टार्ट. बिगिन मतलब शुरुआत करना, स्टार्ट मतलब भी शुरुआत करना. प्रेस दिस बटन ब्लैंक द प्रिंटर. प्लीज़ प्रेस दिस बटन टू स्टार्ट द प्रिंटर. व्हेन विल द प्रोग्राम बिगिन? प्रोग्राम अगर चालू होने के लिए पूछते हैं हम इंग्लिश में देन विल वी हैव टू यूज़ बिगिन. अगर कोई मशीन या कुछ कंप्यूटर हमें चालू करना है देन वी विल यूज़ स्टार्ट. कंप्यूटर में हम कभी नहीं बोलते प्लीज़ बिगिन द कंप्यूटर, प्लीज़ बिगिन द मशीन. वी हैव टू यूज़ स्टार्ट वर्ड फॉर दिस. नेक्स्ट नंबर 4, रीज़न और पर्पज़. रीज़न का मतलब होता है कुछ कारण देना. पर्पज़ का मतलब होता है उनका हेतु क्या है. कैन यू टेल मी द ब्लैंक फॉर नॉट डूइंग होमवर्क. आपने होमवर्क नहीं किया है, क्यों नहीं किया है? क्या आप मुझे रीज़न बता सकते हो? द ब्लैंक ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू फाइंड मोर अबाउट सोलर एनर्जी. ये प्रोजेक्ट करने का रीज़न, ये प्रोजेक्ट करने का हेतु क्या था, पर्पज़ क्या था? टू फाइंड आउट मोर थिंग्स अबाउट दी सोलर एनर्जी. सो ये दोनों मीनिंग्स जो है वो थोड़े थोड़े मैच होते हैं, बट वी शुड नो वेयर टू यूज़ विच वर्ड इन अ प्रॉपर मैनर. नाउ turn your page, you will find out this clock and all the things are given here. Timings along with the picture. How beautiful it is. No, it seems nice, just like a story. So अगर इसमें से हमें कोई लिखने के लिए बोलेंगे तो हमें फटाफट से आ जाएगा because it seems very easy, I think. So what we have to do here, this is what Mr. Fogg does every day. Use the pictures and then clues to write the paragraph about Mr. Fogg's day in your notebook. You can add ideas of your own. You may use words like usually, always, never and so on. What we have to do, this is the whole schedule, whole timing of Mr. Fogg is given and we have to elaborate that. We have to write it down. Suppose Mr. Fogg wake up at 6:40 o'clock. 6:40 o'clock in the morning. 6:40 a.m. we can write down. Mr. Fogg takes shower
Mr. Fogg take bath at 7 o'clock. Then Mr. Fogg is having his breakfast at 8 o'clock. Then Mr. Fogg goes for the work at 8:30. Mr. Fogg come back home at 6 o'clock in the evening. Mr. Fogg is having his dinner at 8 o'clock in the evening or night. Then Mr. Fogg watching television at 10 o'clock. Then Mr. Fogg will go to sleep. Mr. Fogg will go to bed at 10:30 p.m. Okay, so this is the whole schedule given for Mr. Fogg's day-to-day routine. At what time what he is doing. He wake up at 6:45. He go to sleep at 10:30 in night. So now we have to write down this whole schedule. We have to frame this sentence. We have to frame this sentence from this picture for his day-to-day routine life. So let's get start. We will write down this. We will have to write down this in our English notebook. So writing Mr. Fogg always, because here it is instructed that you may use words like usually, always, never, do and so on. Because ये एक दिन की बात नहीं है, ये हमेशा का उनका शेड्यूल है. He does these things every day. वो 6:40 को मतलब 6:40 को ही डेली उठ जाते हैं. फिर वो बेदिंग करने 7 o'clock को ही जाते हैं. वो नाश्ता 8 बजे ही करते हैं. He is having his breakfast at 8 o'clock. This is daily life schedule. So we can use usually, always, never and so on. So in the very first sentence I have used Mr. Fogg always wakes up at 6:40 in the morning. Okay. Now every time we will not write down Mr. Fogg, Mr. Fogg, Mr. Fogg, Mr. Fogg. It doesn't sound good. What is Mr. Fogg? Mr. Fogg is man. So for man we will use he. For women we are using she. For man we will use he. Okay. So he takes a shower at 7. He takes shower at 7 and has his breakfast at 8 and has his breakfast at 8. He usually has coffee and toast for the breakfast. He usually have coffee and toast for the breakfast. मतलब जनरली वो कॉफ़ी और ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं? ब्रेड और टोस्ट. He usually has a coffee and toast for the breakfast. He leaves for work at 8:30. He leaves for work at 8:30. He is never late for work. वो लेट कभी नहीं होते वर्क के लिए because he wakes up, he takes up and he bathe and everything on time. So he never late for the office or for the work. He leaves office at 5 in the evening. He leaves office. He leaves home at 8:30. He leaves office at 5 in the evening and usually back to home by 6 o'clock. ऑफिस वो 5 बजे लीव करते हैं and at 6 o'clock he'll come to the home. He has his dinner at 8 o'clock. He is having his dinner at 8 o'clock. After dinner, he watches the news on television. After dinner, he watches news on the television till 10 o'clock. कब तक देखते हैं वो? Till 10 o'clock. Or we can write down till 10:30. He usually goes to bed at 10:30. He used to go bed at 10:30. 10:30 को वो सो जाते हैं ऐसा नहीं लिखेंगे. He sleeps नहीं लिखेंगे. He goes to bed because 10:30 को बेड के ऊपर जाएंगे. फिर जब नींद आएगी at that time we can say sleep. But
whenever he goes to bed, वो सोने के लिए जाते हैं. Not even Mr. Fogg, not we are talking about Mr. Fogg, but about any of the person. सोने के लिए जाना मतलब go to bed. और पर्सन अगर कोई सो गया है, उसकी आँख बंद है, वो सो रहा है, then we will use the verb sleep. We can say go to sleep, but it would be more appropriate if we will speak go to bed at 10:30. Okay, so we have scheduled, we have framed the sentences for the schedule of Mr. Fogg's day-to-day life routine. So all will have to write down this paragraph in English notebook. आपको points करके नहीं लिखने हैं, you will have to write down the whole paragraph. Paragraph will start from the after leaving some space, and it will be continue in the same line with the very good handwriting.